there is something called as observation muscle, and this is one of the most amazing concept that we have. Actually everybody has seen this but nobody has make it prominent. एंड जब मैं बोलता हूँ एवरीबडी, इट मीन्स कि गुरुओं ने, मतलब काफ़ी गुरुओं ने इसको शायद देखा होगा पुराने. बट सीन ये है कि जैसे क्या हुआ कि इसकी कहानी पहले समझनी ज़रूरी है कि ऑब्जर्वेशन मसल की कहानी क्या है. हम सभी को, चाहे मटेरियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, बाहर यानी इंटरनल जगत और एक्सटर्नल जगत, दोनों में ही अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन की सख्त ज़रूरत है. अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर नहीं हैं तो आप ना अच्छे कलाकार बन सकते हैं, ना ही आप अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं. ऑब्वियसली म्यूजिशियन इज़ ऑल्सो कलाकार. एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा महत्वता है. जहाँ पे भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है और जहाँ पे मैनुअल लेबर इन्वॉल्व है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं. जैसे कॉर्पोरेट जॉब, दैट इज़ जस्ट कि आप सुबह उठे, आपने अपने शरीर को उठाया और शरीर को गाड़ी में डाला, शरीर को ले गए, उस शरीर से काम करवाया. 5 बजे के बाद आप अपने माइंड को जितना अब्यूज़ करना है अब्यूज़ करिए, जितना नेटफ्लिक्स चलाना है नेटफ्लिक्स चलाइए, दारू पीना है, लोगों से अंडशंड बातें करनी है, जो करना है आप करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगले दिन वापस आप लेबर कर रहे हो और आराम से कर रहे हो. लेकिन क्रिएटिव काम में आपको 5 बजे के बाद जब आप आते हो घर, तो अगर आपने अपने मेंटल को अब्यूज़ कर लिया, यानी आपने फालतू के डिस्ट्रैक्शंस पाले, तो अगले दिन जब आप काम करोगे तो आपका आइडिया ही नहीं आएंगे आपको, ना आपको कोई थॉट आएगा. इसलिए जितने भी बड़े बड़े मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, जो कि क्रिएटिव काम में ज़्यादा हैं, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते हैं, ये हमेशा फोकस्ड रहते हैं. फोकस्ड इसलिए नहीं रहते कि वो काम कर पाएँ, फोकस्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके माइंड को अगर हम अब्यूज़ कर देंगे तो माइंड जो है वो तरह तरह की बातें करने लग जाता है और आपको आइडियाज़ नहीं फेंक पाता है वो. और आइडियाज़ अगर विचार नहीं फेंकेगा तो विचार मान लो फेंकेगा कि कटप्पन बाहुबली क्यों मारा. अब यही विचार आ रहा है क्योंकि आपने बाहुबली देख रखी है, तो आपका यही चल रहा है कटप्पन बाहुबली को क्यों मारा, है ना. या फिर अगले सीज़न में क्या होगा फलाने इस एपिसोड के. तो दिमाग आपका पूरा वर्ल्ड व्यू जो है वो चेंज कर देता है. जॉब में वर्ल्ड व्यू अगर आपका चेंज हो रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दिमाग यूज़ ही नहीं करना है, उसमें मैनुअल लेबर चाहिए, राइट. जहाँ पे क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, दिमाग यूज़ करना ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो कंप्यूटर चलाने जा रहे हो, तो एक ऐसा काम जहाँ पे लूप नहीं है, जहाँ पे कुछ नया बनाना होता है, मैं उस काम की बात कर रहा हूँ. तो ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा महत्वता है. अब यहाँ से तो अभी पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं हुआ है ऑब्जर्वेशन का, अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्टेड क्यों नहीं रहते हैं मिलियनियर्स या बिलियनियर्स. आप देखेंगे कि मैंने काफ़ी अचंभा हुआ, काफ़ी सरप्राइज़ हुआ, चकित रह गया मैं देख के कि बड़े बड़े जो मिलियनियर्स हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे. दे डोंट टेक वेकेशंस, दे डोंट डू प्रोस्टिट्यूशंस, they don't do all kind of stuff. They are only focused on work because it gives you a dopamine hit. Let me tell you, this is one of the first thing that I'll be telling you. Listen to this carefully. Open your ears, slap yourself 2-3 times to be fully aware, because you are not going to get the content. If I die, it dies with me. Okay, so you need to understand what I'm going to say. अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना. 2-3 थप्पड़ मार लो अपने आप को. मैं होता तो शायद बजा देता, मजाक कर रहा हूँ. जो भी लोग हैं, जितने भी हैं, मस्क हैं, बेजोस हैं, स्टीव जॉब्स हैं, जितने भी लोग हैं,
ये जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उस काम में अगर आपको 100% चाहिए चीज़, तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसा कोई कंटेंट नहीं करना है गेन, या ऐसे कोई प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करनी है जो आपके विचार को फेंकने में, जो विचार फेंकने की जो मोमेंटम है, जो फ्लो बना हुआ है विचारों का, वो विचारों का जो फ्लो है, जो ट्रेन चल रही है एक डायरेक्शन में, वो ट्रेन जो है, जैसे ही आप किसी भी तरीके की कोई प्रैक्टिस करते हो या कंटेंट देखते हो, तो फ्लो चेंज हो जाता है। मतलब ट्रेन जा रही थी औरंगाबाद, अब ट्रेन चलने लगी है अफ़गानिस्तान की तरफ। आप कहोगे ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि विचारों को सही तरीके से यूज़ करने के लिए विचारों को अब्यूज़ नहीं करना है। विचार एक डायरेक्शन में चलेंगे, और जब चलेंगे तो ही वो आपको क्रिएटिविटी प्रदान कर पाएंगे, यानी सृजनात्मक प्रकृति। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर जो है वो फोकस्ड इसलिए रहते हैं, या कोई कलाकार है वो फोकस्ड इसलिए रहता है, जो बड़े कलाकार है, जो ये अय्याशी वाले नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे AR रहमान हो गए, बड़े बड़े, वो फोकस्ड इसलिए रहते हैं अपने काम पे, बिकॉज if they divert the attention, the creativity stops. So if you abuse your mind by binge watching, by talking nonsense, the train which is going to Aurangabad, and during the process of going to the Aurangabad, the train is giving you thoughts, the thoughts which are creative to solve that new problem. That's called innovation, right? So the train has to be always going on the direction of Aurangabad. If you change the fucking direction to Afghanistan, the thoughts will be related to Afghanistan. So this is where you always have curiosity. The brain becomes curious. The brain loses the momentum, and the momentum is disrupted. So what happens is, you might think, okay, I am watching something for 3-4 days, I am doing these practices which is not related to my work, but at the same time what is happening is, after 4-5 days it will be very, very hard to get back on the work. And work means not manual labor, works means creativity. सो इफ़ यू आर ऑलवेज इन टू द क्रिएटिव जोन, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, मिलियनियर और बिलियनियर जो होते हैं, वो हमेशा क्रिएटिव होते हैं, दे ऑलवेज क्रिएट समथिंग न्यू, राइट? सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन टू दैट स्टेट, यू नीड टू नॉट टच द ट्रेन गोइंग टू औरंगाबाद. That means the flow of thought must not be disrupted. If the flow of thought is disrupted, the creativity stops. So this is why they are focused. They don't take vacations. They don't do prostitutions. Sometimes here and there, they might do a little bit of drinking, but they are not into drugs. They are not into extreme prostitution. They are not into travel. Whereas जितने भी middle class के लोग हैं, they want to get rich so that they can fucking travel. Especially ladies, they want to travel all the time. But the billionaire and millionaires are not traveling enough. They don't travel. कभी इसका क्वेश्चन करो, कभी सोचो कि why they are not traveling like you. उसका रीज़न सिर्फ एक ही मिलेगा आपको आखिरी में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल द डोपामीन हिट by getting a transaction of $1 million inside your bank account is going to make you work again and again. That dopamine hit inside the brain is greater than the traveling hit, is greater than the prostitution hit, because that hit is created on Rajasic level, and the pleasures on Rajasic level are 1000% more
than the tamasic level. And travel is considered in tamasic level. Whatever is giving you immediate pleasure, emergency pleasure, तत्काल में अगर कोई आपको मज़ा मिल रहा है, तो यात्रा भी तत्काल में आपको आनंद देती है, और यात्रा जो है वो तामसिक में आती है, क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिक पहाड़ आते चले जा रहे हैं, बर्फ आती चली जा रही है, मज़ा आ रहा है, राइट। और जैसे बाकी के सामान्य प्लेजर होते हैं, 4-5 दिन बाद वो मज़ा बंद हो जाता है, फिर आदमी स्ट्रॉन्गर मज़ा मांगता है। इसलिए पहाड़ों पर जाके आदमी 1-2 दिन पहाड़ों को देखता है, दूसरे दिन कहता है गांजा जलाओ, गांजा जलाओ। क्या करें पहाड़ों को देख के, इन वादियों को देख के क्या करें, ये एक रीज़न है। लेकिन चकित मैं तब रह गया जब मैंने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो सारे सपने नहीं पूरे कर रहे हैं जो सपने आपने देखे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी और उनकी सोच में एक डिफरेंस है। एक तो पहली चीज़ ये है कि अमीर लोग जो होते हैं, यानी अमीर मतलब क्या, वो नहीं जो बाप के गल्ले पे बैठे हुए हैं। मैं उन अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ कि सोना बेच दिया फिर नया सोना ले लिया, कि आप कोई ज्वेलर हो और आए 75% में आपने सोना खरीदा, 20% कमीशन कमा लिया। मैं कमीशन बेस्ड ये सब बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अय्याशी करेंगे ही करेंगे, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिविटी की। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ऑल द टाइम द माइंड इज एड्रेस टू दैट प्रॉब्लम। सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ डोपामाइन हिट इनसाइड द ब्रेन, एंड ये सब ट्रैवल कर चुके हैं, ये सब प्रोस्टिट्यूशन भी कर चुके होंगे या नहीं भी किया होगा, आई डोंट नो, बट ट्रैवलिंग तो 100% सबने कर रखी है। तो शुरू में जब इन्होंने ट्रैवलिंग किया होगा, इनको समझ में आ गया होगा कि ट्रैवलिंग में कुछ पड़ा नहीं। तो वही बात है, माया में डूबा और खुद को भूला। माया में डूब के खुद को भूल गए। माया मतलब होता है वो जो नहीं है। लोग कहते हैं पहाड़ माया है, पानी माया है, दुनिया माया है। दुनिया माया नहीं है, घोंचू। ये जो गलत फहमी है कि दुनिया में सुख है, ये माया है। ये जो सोच है, जो धारणा है, ये माया है। माया ये थोड़ी है कि जगत नहीं है। लोग कहते हैं जगत नहीं, हम तो ऐसे ही। अरे अपना सर फोड़ लो, पता चल जाएगा अभी जगत है कि नहीं है। माया जो है वो है कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ पैसा कमाने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है ये खुशी है। जब पैसा कमाया तो पता चला है ही नहीं। तो ऐसे बिलियनियर्स के साथ क्या होता है, मिलियनियर्स के साथ क्या होता है कि जब ये पैसा कमाते हैं और पता चलता है कुछ नहीं है, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है उसमें चले जाते हैं, जो उनको लगता है बेहतरीन है। वो है कि काम को आगे बढ़ाओ, कर्म करो और कर्म में आनंद लो। तो जब आपके अकाउंट में डोपामिन हिट आता है, मतलब जब आपके अकाउंट में पैसा आता है तो डोपामिन हिट आता है आपके ब्रेन में। वो डोपामिन हिट सबसे बड़ी चीज़ होती है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट थिंग ऑफ ऑल टाइम। ऑल्दो इट्स नॉट जस्ट मनी कमिंग इन फॉर देम, फॉर बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स, it is actually the work that has been done that is giving the pleasure. So for example, I was able to go to the Mars. That is a big achievement, so I get a dopamine hit, right? So I can use the reusable rockets. I can make the rockets reusable. That is dopamine hit. So the problem is solved. You get the hit. So it's not just about all the time money. Initially it will be money, but the moment you expand the business, you feel that money is nothing, and money is just a resource to get that problem solved. That's it. And the money will start collecting inside your bank account. You'll use the money wisely. And then what happens is, the only thing which is left for pleasure is dopamine hit. That's it. Now this is where we stop.
Let's begin from the point of view of observation. What is observation? There are two kinds of observation. Observation with an agenda, and second kind of observation is observation as an awareness. एक है एजेंडा कि मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिल्ड एस्टैब्लिश दैट द ऑब्जर्वेशन is the most important thing of all time if you want to become successful in any field, in material world and internal world both. Coming to psychology, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, स्मृतियाँ, ऊर्जा, इंद्रियाँ, ये सब जो है ऑब्जर्वेशन से समझी आती है, ना कि कोई गुरु समझा रहा है या कोई पुस्तक समझा रही है. गुरु और पुस्तक जो भी समझाएगा उससे सिर्फ तुम मानोगे, मेरी बातें सुनोगे, मानोगे, जानोगे नहीं. जानने और मानने में फर्क होता है. जब तुम जान जाते हो तब तुम सांदर्भिक आवेदन करना सीख जाते हो. अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच हैज नॉट बीन टोल्ड यू इन द लास्ट 10,000 years. Nobody can come to this content. Let me tell you, the content which I am giving right now, nobody can come near to this content. Recently I did a video on YouTube and people are like I thought कि ये जो लोग हैं समझ नहीं पाएंगे, but they are actually मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग सत्य सुनना चाहते हैं. मैंने संगीतकारों को इतनी बुरा भला वहाँ पे बोला और सत्य समझाने की कोशिश करी. ठीक है, वो सारी चीज़ें आप सोचो कि इतना नॉलेज कैसे हुआ आपको. नॉलेज कुछ नहीं है, वो सांदर्भिक आवेदन है. तो पहली चीज़ जो होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन, और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है सांदर्भिक आवेदन. ये दूसरी चीज़ मिसिंग है. इस दूसरी चीज़ को करने के लिए थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी भी चाहिए, या ऑब्जर्वेशन ही चाहिए, क्रिएटिविटी नहीं चाहिए. एक्चुअली क्रिएटिविटी चाहिए ही नहीं, ऑब्जर्वेशन की गहराइयाँ चाहिए. तो क्या होता है कि जब आप ऑब्जर्व करना चालू करते हैं तो पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो एजेंडा ऑब्जर्वेशन. एजेंडा ऑब्जर्वेशन ये है कि आपको हमेशा कुछ चाहिए तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो. और एक है जागृति. दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो है जागरूकता या जागृति. ऑब्जर्वेशन एज एन एजेंडा, विद एन एजेंडा, फॉर एन एजेंडा. एंड सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन एज अवेयरनेस, total awareness with no intention of any motive, any belief involved. Total awareness is just like sitting and seeing. It's like I am asking you to just observe your AC. अब आप पूछोगे AC को क्यों देखना है? Just shut the fuck up, observe the AC. आप कहोगे इससे क्या होगा? Exactly. You see, there are two elements which I can touch in observation. The first element is observation to achieve the material world, which is important, which was not discovered till 2024. I thought observation is just needed inside, right? मुझे लगता था कि observation जो है वो it is just needed inside. Actually, I need a lot of meditation because जब मैं meditation नहीं करता हूँ तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा बात करने लगता हूँ. आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया? वो आप नहीं समझ पाओगे, वो मुझे खुद नहीं समझ में आता. तो आई एम स्पीकिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश राइट नाउ. आई एम सॉरी, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज ये मेरी प्रवृत्तियाँ बहुत अभी समय अंग्रेज़ी बोलने के लिए बोल रही है. मैं अभी मेडिटेशन करूँगा तो मैं टोटल हिंदी में बात कर सकता हूँ. सो दिस विल बी मोस्टली इन इंग्लिश, सॉरी. सो व्हाट हैपन्स इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? So the first observation is the observation for an agenda. Second observation as total awareness. That's it. There is no agenda involved, right? In the second observation. So I thought 2-3 years back कि observations is just needed in the spiritual world. To observe, to look at the brain as it is. So what happens is you get a lot of content about the brain once you start observing the brain, right? It's an amazing thing. So let us talk about one by one. दोनों में we'll be talking that. पहली चीज़ है observation with an agenda, right? So agenda can be anything. Can be an agenda means
to create, right? If you want to create, if you want to be the greatest in the rajasic level, राजसिक मतलब ही होता है क्रिएटिविटी। राज वही करता है जो क्रिएटिविटी अच्छी करता है। राजा इसीलिए बना हुआ है। राजा को सब लोग आके बताते हैं कि सर ये हो रहा है, अब क्या करना है। राजा अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करता है, राजा आदेश देता है, राजा ब्रेन है, बाकी सब फिजिकल लेबर है। तो प्रजा, सैनिक, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब फिजिकल बॉडी की तरह है, राजा जो है ब्रेन है, राइट। सो इसीलिए राजसिक कहा गया राज, क्योंकि जैसे द मोमेंट यू आर द बिगेस्ट म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम, यू आर रूलिंग। सो A.R. रहमान इज रूलिंग, राइट। Elon Musk is ruling what? Their own category. So it is called rajasic level. Now the element which is involved to be the best ruler in your field is creativity. So the moment you have great creativity, you are bound to rule. सो इफ यू आस्क मी राजसिक में सर एक वर्ड में बताओ, समाप्त कर दो, वो है क्रिएटिविटी। राजसिक इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, राइट। नाउ विद दैट क्रिएटिविटी वी कैन रूल। नाउ हाउ कम द क्रिएटिविटी इज लाइक, हाउ कैन यू क्रिएट? व्हाट इज क्रिएटिविटी? सो वी हैव टू आस्क व्हाट इज क्रिएटिविटी, नॉट हाउ टू क्रिएट, बी क्रिएटिव. Because once you understand what is creativity, then only you can understand how to be creative, right? So what is creativity? So what is creativity? Creativity is nothing but the permutation and combination, mix and match of observation. Let's repeat it again. Creativity is nothing but the permutation and combination of the observation. It's a very different definition. You might not have heard this. There is nothing called as creativity actually. There's only a mixture of observation. That's it. It's like दाल, बहुत से दाल, खिचड़ी, दही, सब्जी सब डाला, उसको मिक्स कर दिया और उसको हम कह रहे हैं देखो हमने खिचड़ी बना दी। वो खिचड़ी नहीं है, वो दाल, चावल, सब्जी और विभिन्न अलग अलग तरीके के पदार्थ मिक्स करने से वो कोई नई डिश नहीं बन जाएगी, वो बस अपीयरेंस में अलग लगने लगती है। इट्स अ डिफरेंट, आपसे तो डिफरेंट, इट्स नॉट अ डिफरेंट डिश. We just have an illusion that it's a different dish. It's called khichdi or tehri or whatever, or upma or वो biryani, veg biryani, whatever, right? So to understand creativity, we must understand how was English language formed. So if you start observing, there are sentences, then there are monologues, then there are bigger paragraphs, essays, right? So if you zoom into the paragraph, it will become sentences. If you zoom into the sentences, it will become letters. And if you zoom into the letters, you will come at the fundamental ground of English language, and that is alphabets, 26 letters of alphabets. So with the alphabets, words are formed, and with the words, sentences are formed, and with the sentences, the paragraphs are formed. This is where you can take the hierarchy, और ऊपर भी जा सकते हो, articles and all that, essays, right? But the magic happens when you observe the alphabets. So if you observe the alphabets, you might say,
ओ ABCDEFGHIJK L M N O P ये तो इंसान ने बनाया है ना, तो ये भी क्रिएटिविटी ही तो हुई. But actually it is not creativity. It is just a mix and match, permutation and combination of lines. And the lines were formed when we were using the sign languages. The lines, the lakirein are molded or folded or curved, turned, and they have formed a letter A. A letter is nothing but the line. The lines were there on the planet. Let us understand this. The lines were there on the planets hand before the human beings. You just have to pick up a stick and just draw on the mitti, soil. That's it. And make an arrow. But the line was there on the planet. We got an idea to use those lines. So before the languages evolved, there were sign languages. Please understand this. The sign languages uses lots of lines. So if you bend the line little more, it will become a circle. Right? Circle is a line. The idea was generated during the sign language era that we should use the lines for our own benefit. So they created millions and trillions of permutation and combinations of those lines. And those lines created the alphabets. Those alphabets created the words. The words formed into sentences. Sentences formed into paragraphs. And those we are using right now. There's nothing called as creativity. You observe the fucking line. You observe the lines. You got an idea. What if? And you used it. So who observed the line? That is the greatest observer. The person who observed it invented the sign language. So he was the observer. There were hundreds of people who could have observed that we can use the lines. But the person who got the idea was a greatest observer. He was an observer. Right? So if you don't observe, you don't get the idea of sign language. तो जिसने ध्यान दिया, that person used it. And then उसने और लोगों को ध्यान वहां पे करवाया कुछ बना के. तो क्रिएटिविटी जहां भी है वहां पे पहले ऑब्जर्वेशन आएगी, पहले क्रिएटिविटी नहीं आएगी. ऑब्जर्वेशन आएगी कि ये है, फिर आएगा व्हाट इफ, फिर आएगा क्रिएटिविटी. Right? So this is how we form the language. And this is how we have been forming everything. Right? So the content is in the observation. And millions and trillions of years ago, or let's start from there, 10,000 years ago, एक योगी आता है, उस योगी को कहते हैं शिव, आदि योगी. उस योगी ने सप्त ऋषियों को भेजा और ध्यान के बारे में बात करी. पर एक्चुअली साधना जो है वो आपका ध्यान बारीक करती है. ध्यान नहीं है, साधना ध्यान नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. साधना, साधन, मीडियम. राइट? तो मेडिटेशन इज नॉट ध्यान. मेडिटेशन helps you
to settle your observation. Observation is dhyan. Meditation is not dhyan. Meditation is not dhyan. Observation is dhyan. The dhyan word is called observation. So that is why we have been, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, everybody in this culture has heard about this word dhyan. Everything you achieve through dhyan. What happens if you don't pay attention? You don't see. If you want to have something, you need to pay attention. You can be having sex with your wife and thinking about your work. You will not be feeling any sensation. So let us rephrase this. If you are present there, it doesn't mean you are feeling it. So if you are fucking your wife and you are thinking about your work, you will not feel the sex. You will only feel the sex when your entire attention is on your penis. And her entire attention is on the vagina. The more attention you have on the intercourse or on the genitals during the intercourse, the more pleasure you have. But because your mind is fucking distracted, you don't feel sex. You feel very less sex. Why? Because the thoughts are activated. So if you want to feel, you need observation. If you want to learn, you need observation. If you want to create, you need observation. The person who observed the line created the language, and the language evolved from there. Whoever has done the evolution, I am sure, वो भी एक अच्छा observer था, जिसने साइन लैंग्वेज से रिटन लैंग्वेज में आया जो, right? So this is the observation for the internal world. And then there is observation for the external world. Now the observation for internal world. The mind is, it's a very different, it will take a lot of, लगभग 1-2 घंटा और चाहिए होगा मुझे इसको इंटरनल वर्ल्ड में समझाने के लिए. सो वील रैप इट अप ओवर हियर. वी माइट कंटिन्यू ऑन इंटरनल ऑब्जर्वेशन इन द फ्यूचर पॉडकास्ट. बट जाते जाते इंटरनल ऑब्जर्वेशन में आपको टोटल अवेयरनेस चाहिए. यू कैन नॉट वॉच योर ब्रेन विद द पास्ट कंडीशनिंग, बिलीव्स, motives, agenda. It all vanishes. So how to observe without the observer? That is the biggest question, because the observer is the very observed. Whoever is observing is in the illusion that he is observing, but whatever is observing is that fragment which is observing. So there are multiple fragments inside the brain, multiple identities inside the brain. When one identity is in conflict with the other identity, there is always conflict if you have divisions inside the brain. Hundreds of identities are there. Thousands of identities are there. I'm a nationalist. I'm a BJPian. I'm Yadav. I'm Indian. I'm this. I'm that. This is identities. Then there are desires. There are beliefs. There are motives, agenda. So all these things you observe from all these standpoints, and you think you're observing. You're not observing. You're observing the observed. If you want to observe without the observer, you need to just sit and watch the reactions of the mind during the work or anything, without any interruption into that why it is happening. If you keep on observe करते वक्त आपको कुछ दिखा और आपने कहा oh why it is happening, now you have an agenda, you have a desire. So the moment you say why it is happening, entire game changes. You have shifted into one of the fragments. So you're not observing, you're observing the observed. मतलब क्या? You're not into total awareness.
जो भी आपने पकड़ रखा है बिलीफ, आप उससे ही ऑब्जर्व कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड, राइट? सो वी शुड नॉट बी इनटू द ऑब्जर्व. वी शुड ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर, विदाउट दैट tiny fragment or lie. So if I ask you just look at the AC, just look at the AC, you'll say but yeah, the moment you ask क्यों करना है, क्या करना है, no. But आपको मैं बोलूँगा just look at the brain, आपको I don't like what क्यों, पर्पस क्या नो, जस्ट लुक एट द ब्रेन. पर होगा क्या? यही तो दिक्कत है आपका. इफ यू जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट द ब्रेन, यू विल सी द एंटायर ब्रेन इन इट्स टोटैलिटी. नो चेंजेस टू द ब्रेन, नो टचिंग टू द ब्रेन. डोंट टच द एसी, जस्ट ऑब्जर्व द एसी. The entire thing will be visible. The entire belief system will be visible. The desire will be visible. What is happening inside the brain through that desire, that conflict, that reactions, that changes. Do not interfere. Just observe. So you should not have an agenda. You should not observe through the past, because whatever you will be observing, it will be the part of that same conditioning. So inside, the game is totally different. If you observe inside, the game is totally different. Outside, you need an agenda. Inside, you don't need an agenda. It's a curse. Because the mind, the thought is divided. Please understand this. The thought must not participate in observation. The thought always divides. It cuts out. That's why we are doing dissection. That is why we don't observe the flower. We dissect the flower. We don't observe the bodies. We dissect the bodies. Because the thought very itself divides. It cuts into 2 parts or million parts. More than two. Right? So what happens is, if you observe through the thought, you might be, yeah, okay, I am observing. No. You should observe without the thought, without the observer. And that thought can be anything. Right? So if I ask you in simple words, if I ask you to look at the AC, just look at the AC. Do not have the question inside you, why should I look at the AC? इससे क्या होगा, ये क्या होगा? Just look at the AC as it is. Do not touch the AC. Do not think about the AC. Do not have an agenda about the AC. Just look at the AC. Without anything. Yes, without anything. Just look at the brain. So the entire world starts opening inside you. अभी तक आपको सिर्फ बाहर के जगत के बारे में पता है, क्योंकि आप बाहर देखते हो. पर जैसे जैसे आप अंदर देखोगे, धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने आ जाएगा. इंद्रियों का सच सामने आ जाएगा. इंद्रियां क्या करती हैं. अभी मैं इंद्रियों को ऑब्जर्व करता हूं और तुम्हें आके बताता हूं. नहीं, तुम्हें खुद ऑब्जर्व करना है. इंद्रियों को ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इंद्रियों को ऑब्जर्व करना है. और ऐसा नहीं है कि फोकस्ड ऑब्जर्वेशन करना है कि आज मैंने इंद्री बोली तो इंद्री ऑब्जर्व कर. नो. राइट? सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. नथिंग हैपेंस. You just get the game. You just see the game as it is. You see things as it is. What is? क्या है वो पता चल जाएगा. अभी कुछ नहीं पता क्या है. अभी क्या है पता चल जाएगा. तो उससे क्या होगा? You accept the fucking reality. So there is a huge acceptance that this is the way it is. You accept that. You learn that this is the reality as it is. What is the reality? You don't know. You have to look towards the reality right now. And look, just look simply. साक्षी भाव. अब साक्षी भाव का उद्देश्य, आपके अंदर उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए. इफ यू हैव उद्देश्य कि मुझे जानना है ब्रेन के बारे में, अगेन यू विल बी गॉन. यू जस्ट ओपन योर आईज, जस्ट लुक विद इन. नाउ व्हाट हैपेंस इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, during the brain observation, the mind is
not attentive enough to see the brain, because the brain is subtle. So the mind needs absolute sharpness of the attention, laser point attention, which cuts the object into two parts. That kind of edging or that kind of sharpness, pointy attention should be there. Because the more pointy attention you have, the more subtler you can look. The more subtler you can look, the more reality shows itself. The more reality shows itself, the more wise you become. Right? But this is all about becoming. So we should not use the word becoming or getting this, getting that. Just observe. Right? So the conflict is that the moment you start observing the brain, your attention is not in your hand. So you need meditation to observe the brain. What is the point of all these things? That is the biggest question. The biggest question is that the biggest answer you'll get if you just ask me that what is the point of all these things? The point is happiness. If you want happiness, you need to observe. So inside the brain, there's a different world altogether. It's completely different from the outside world. There's a new world which is unheard of. And I am inside that world, just trying to bring out and talking about that world. But you don't witness that world, you don't get that world. You have to witness that world yourself. So what I am doing is, the entire study of mine is to observe inside the world from within and to just dictate it outside. That is what I am doing. But in the process, I have also learned the value of observation. I have learned that to achieve anything in this world materialistically, you need observation. Because observation is the key ingredient for creativity. And you need creativity to rule the world. So if you have the desire to rule the world, or at least earn some money, you need to have some observation skills. And if you want to rule the internal world, you need observation. So this is why the entire Sanatan Dharma is talking about dhyan. And the sadhana is not dhyan. The sadhana is actually a sadhan for dhyan. Your dhyan, the entire ball game altogether is distraction versus attention. That nothing else. The more attentive you are, the more things you can achieve in the world and inside the world. And the more distracted you are, the more suffering and the more longing will be there. So we don't take the word attention and distraction seriously. We think knowledge, practice, effort, energies, all that fucking bullshit is more important. But the most important thing in this world is attention. This is what the people are fighting for right now. Attention is money. Because once you pay attention, you get money at the end. Maybe 2 years, 3 years later. But you get the money. Right? So this is why the social media world is fighting for attention. And they knew it long before. They knew it that in the future, the sages, the rishis, उनको ये आभास था, they knew it, that in the future, the entire fight or the entire problems human being will be having is because of distractions.
So that is why they have embedded this word, attention, inside Sanatan Dharma. And every religion has heard this word, if they have been into this country from the childhood. Right? So this is the importance of attention. Now what happens is that with attention, you can even open the chakras. That is another ball game altogether. That is a different kind of world, the energy world. We don't know about that world. But why do I talk in so much gray area? I talk about ghosts, I talk about soul, I talk about chakras, I talk about kundalini, I talk about black magic sometimes, I talk about tantra. I talk about so much logical, like I go into Krishnamurti phase, then I go into Osho phase. What is happening? Why I am so grey? Why I am admiring Krishnamurti at the same time I am criticizing Krishnamurti and Sandeep Maheshwari? Why? Why it is happening? Because the reality is in neutron, not in proton or electron. The proton is positively charged, the electron is negatively charged. This is how the world operates. BJP or Congress. That is how the world operates. There is neutrality. The reality is in neutrality. Neutral is grey all the time. And what about these concepts? The concepts of mysticism, black magic, ye, wo and all that. Why I talk about that? Because I have seen it inside the brain. I am practicing observation from last 10 years. I am seeing inside the brain that how the energy is operating. What happens to the energy during the meditation of 2, 3, 4 hours long? What happens to the energy? Because after meditating for 4 hours or 3 hours, I observe the system. And that is where the question arises. It has arisen 5, 6 years back only. That what the hell is happening? It is happening inside me, so it must be true. So I have to investigate into that. And when I investigated, it opened another world. It opened a brand new world altogether. And that world was called energy world. I keep that word. Energy world. That's a different ball game altogether. It is not related to Krishnamurti at all because he refused talking it. Because everybody has chosen a niche or area. Somebody talks about questioning and observation. Somebody talks about just questioning. Somebody talks about this is happening, this is not happening. The reality is fucking grey, bro. It is always grey. That means if there is something, there has to be some existence. I talk about reincarnation. I knew that it is happening. Now the matter is just to prove myself. That's it. So I might sound logical, but I have seen the limit of logic through the observation. Whatever we are saying, whatever we are uttering a word, whatever, like it's all, whatever, like we have half complete knowledge. And based on that, we are making some conclusions. It's bullshit. Right? So, आप इतने ऑब्जर्वर अच्छे हो जाओगे कि आपकी जो ऑब्जर्वेशनल मसल है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि द मोमेंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑब्जर्वेशन देयर इज मसल, और वो मसल जो है वो स्ट्रांग होती जाती है. तो जितना ज़्यादा वो स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा आप सटल ऑब्जर्व करोगे. तो आप शुरू में ऑब्जर्व करोगे विचारों को, वहाँ से फिर आप आओगे बुद्धि पे, फिर आप इंद्रियों पे आओगे, फिर आप, मतलब मैं ऐसा कोई ब्रिज नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे ही ऐसे होगा. मैं बस एक बता रहा हूँ कि सटलर कैसे दिखता है, एक आइडिया लग जाए आपको. लास्ट में आप ऊर्जा पे आ जाओगे. फिर आपको पता चलेगा कि ये ऊर्जा ही है जो अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट हो रही है. इज नथिंग कॉल्ड एज फिजिकल वर्ल्ड, राइट? इट्स अ डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ दैट सेम एनर्जी. So the operation, the basic operation, the basic coding or the basic programming or the basic chalan, the movement and activity, the basic laws are same. So whatever law is applied on the energy, it is applied on the physical world also. Although it might seem unbelievable, but it is the basic concept, right? So
This is where I've reached. I've reached to the level of Urja, and this is where I've opened another world for myself, not you. I'm just trying to dictate it here. And that is the world of mysticism. I know for sure that it is happening. So I'm not saying ghost exists or not. I'm not talking about ghost and all that. I'm just talking about that what is observation, trying to tell these things. So if you observe without any motive, without any agenda, without any preconceived notions, then you can look at the reality fresh. Otherwise उस reality के बीच में हमेशा एक distortion आ जाएगा. जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को मानोगे उतना ही ज़्यादा आपका वो ज़िंदगी की लेगी वो चीज़. जितना ज़्यादा देखो, हर चीज़ में लक पेल देते हैं लोग. तो भगवान डाल देंगे, कुछ अच्छा हुआ तो भगवान, कुछ खराब हुआ तो भगवान, कुछ अच्छा हुआ तो लक, कुछ अच्छा हुआ तो डेस्टिनी, कुछ अच्छा हुआ तो डेस्टिनी, कुछ खराब हुआ तो डेस्टिनी, कुछ अच्छा हुआ तो बुरा वक्त चल रहा है पिछले जन्म के कर्म, कुछ खराब हुआ तो पिछले जन्म के कर्म. इसका कर्म अच्छे थे तो ये मिल गया, इसके कर्म खराब थे तो गरीब निकल गया, इसके कर्म अच्छे तो. अरे एक चीज डिसाइड करो ना, या तो भगवान चूज करो, या तो लक चूज करो, डेस्टिनी चूज करो, या तो पिछला जन्म चूज करो. सबका अलग ही अलग होता है. उसका वक्त अच्छा चल रहा है तो कहेंगे पिछले जन्म के खराब कर्म थे, कोई कहेगा कि उसका भगवान की कृपा है. अरे एक चीज डिसाइड करो ना. एक नंबर के बेवकूफ हो क्या, इतना नहीं देख पा रहे हो? एक ही चीज बोलो, हर आदमी एक चीज बोले भगवान नहीं. कुछ लोग अलग बोलेंगे, कुछ लोग कहेंगे डेस्टिनी है, हम लोग तो मिले ही थे, डेस्टिनी था. फिर कहेंगे, कुछ लोग आएंगे हम लोग का लक अच्छा था, मिले थे. फिर कहेंगे हम लोग इसलिए मिले क्योंकि भगवान की कृपा थी. फिर कहेंगे हम पिछले जन्म के साथी थे इसलिए मिले. अबे एक चीज डिसाइड करो. ये डिवाइडेड अटेंशन है, डिवाइडेड, हर चीज का डिवीजन. इसीलिए तो वो कृष्णमूर्ति यही तो कह रहे हैं कि माइंड इज डिवाइडेड इनटू हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ फ्रैगमेंट्स, and with that fragment we are looking. So whatever we are looking is that fragment. At the end we find that fragment only. If something is happening, luck. If something is not happening, luck. So there are millions and hundreds of fragments inside the brain. So that is why everybody is answering different to that one particular question कि हम लोग क्यों मिले, ये दोनों लोग क्यों मिल गए पति पत्नी. तो उसके हजार अलग अलग तरीके के जवाब है सबके पास. कोई कहेगा कुंडली अच्छे, ग्रह अच्छे थे. एक चीज डिसाइड नहीं हो पा रही है. हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ फ्रैगमेंट्स वी हैव. एंड देन वी आर फाइटिंग फॉर दैट फ्रैगमेंट. हाँ नहीं डेस्टिनी से होता है, अब मैं तुझे गोली मार दूंगा. नहीं लक होता है, अब गोली मार दूं. अरे कोई भाग्य को मानता है तो वो लड़ाई कर रहा है भगवान वाले से कि भाग्य होता, भगवान नहीं होता, गोली मार दो. यही तो हो रहा है. और क्या हो रहा है? वो कह रहे अल्लाह होता है, वो कह रहे शिव होते हैं, वो हनुमान होते हैं. और क्या हो रहा है मुझे बताओ. फ्रैगमेंट्स की लड़ाई चल रही है. एक फ्रैगमेंट पकड़ रखा क्योंकि ऑब्जर्वेशन नहीं है. अगर टोटल रियलिटी देखोगे, आप देखोगे ब्रेन में कितने फ्रैगमेंट्स मिलेंगे आपको. इतना ही अगर आपको देख पाए तो, राइट. तो सत्य क्या है? सत्य हमेशा बीच में होता है. और माइंड बना है पोलैरिटीज में जीने के लिए. इसलिए लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने. इसलिए आप देखोगे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कलाकार हो, कोई भी सरकार हो, पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक वर्सेस मिलेगा ही मिलेगा आपको उसमें. और उस वर्सेस में और भी लोग होंगे जो वर्सेस में होंगे, लेकिन दो लोग सबसे ऊपर होंगे. बीजेपी वर्सेस कांग्रेस. और भी लोग थे, नहीं दो लोग की लड़ाई होगी, मेन वही होंगे. मार्केट शेयर सबका ऐसे ही काम कर. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डुअलिटी. दो बिजनेस हमेशा लड़ेंगे. और भी बिजनेस हैं, उनके पास भी मार्केट शेयर है लेकिन कम है. 90% मार्केट शेयर दो बिजनेस के पास ही होता है. पिज्जा हट वर्सेस डोमिनोज. सो आपको डुअलिटी में ही सब कुछ मिलेगा. एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट मिलेगा. इसलिए दुनिया देख नहीं पा रही है न्यूट्रल क्या होता है. Called neutrality. I hope you're understanding my point, what I'm trying to say over here. There is nothing called as listening to the Guru or reading to the Upanishads.
These are just pointers. There is always observation if you want to have the truth seeking, or if you want to achieve anything in the world. You need to be the biggest observer of all time. Thank you so much.